अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वेलो बात शोर। इस वीडियो में हमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हमारी BIF101 का जो हमने कर लिए हैं टॉपिक्स और 66 है, हम उससे आगे करते हैं। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। अगस्त मेरा सेशन एक्सपायर हो गया, इसको फिर लॉगिन करके फिर यही से पढ़ेंगे। ओके, सो आप लोगों में से अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई भी क्विज़ आ रहा है, कोई भी असाइनमेंट आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो आपको बता देती हूँ। जो मेरे LMS पर अपलोड होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा हर चीज़ की तैयारी पहले से स्टेप वाइज करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा अभी भी जो कुछ आने वाला है, कल से जो कुछ स्टार्ट हो रहा है उनकी तैयारी भी मैं स्टेप वाइज ही करूँगी इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह वो भी अच्छे हो जाएंगे। सही है, तो आप लोग भी तैयारी करके किया करें, रैंडम नहीं किया करें, ठीक है, ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। इसके अलावा अब हमारे पास लेसन नंबर 67 है, BIF101-introduction to bioinformatics का। इसका टॉपिक है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स स्टार्ट, हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर। which among the following structure of a protein describes the folding of its secondary structural elements and specifies the position of every atom in a protein, including those of side chains? चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। Tertiary structure of protein is actually the tertiary level of organization of protein molecules. So the overall three-dimensional arrangement of all the atoms in a protein molecule is referred to as the protein's tertiary structure. So if a polypeptide chain, it assumes a fully folded and three-dimensional structure, that is a tertiary structure of protein. Here you can see this is single polypeptide chain, and it has assumed the tertiary structure by folding back and forth, and it assumes fully functional three-dimensional structure. Here in this structure you can easily see the disulfide bonds have been formed between the different amino acids of the same polypeptide chain. As you know, in a secondary structure, the secondary structure includes the local aspect of conformation, but the tertiary structure includes longer range of amino acids sequences. For example, the amino acids that are far apart in the polypeptide chain may interact within the completely folded structure of a protein. For example, if a protein contains cysteine amino acid at position 5 and the second cysteine amino acid may be present at position 90, so they are very far from each other, but when the polypeptide
polypeptide will fold into its tertiary structure, the 90 number cysteine may come close to the cysteine number 5, and they both may interact, they both may form disulfide linkage. So in this way, the number of weak interactions and covalent interactions are made between quite far amino acid residues. Interacting segments of a polypeptide chain in a tertiary structure, they are held in their characteristic tertiary positions by different kind of weak interactions and sometimes by covalent bonds as well. So as you know, this tertiary structure is a fully folded conformation, and this fully folded conformation is also a stable conformation like alpha helices and beta sheets. And how these segments are remained at their place, and they remain at their place through the weak interactions as well as covalent interactions. As I mentioned, the far located cysteine bonds, cysteine amino acids can make disulfide linkages. Similarly, very far located amino acids can make hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic interactions, and some covalent interactions. So in this way, a stable three-dimensional structure is formed, which is tertiary structure of proteins. Some very large polypeptide chains usually fold into two or more globular clusters, and these clusters are called domains, which the presence of these domains often give these proteins a bi or multi-lobal appearance. So there is a fully folded protein molecule, and in this molecule there are many, maybe two or more smaller clusters of polypeptide chains, and these smaller clusters are called domains. Like here in this pictures you can see this is a protein, and this is at its tertiary level of organization. In this protein you can clearly see one domain is this, other domain is this, and the third domain is this. So this whole molecule contains three domains, and it appears that this protein is tri-lobular. Three lobes are present in this molecule. Similarly, in this molecule you can see this is a three-dimensional structure of a protein which is at its tertiary level of organization, and in this protein, although it is tightly folded and it is hard to distinguish domains, but even then on close observation you can find the domains. One is this, other is this, and third one is this. So these three domains are also present in this protein molecule. So in this way, the larger proteins, they make domains, and these domains are further made up of some super secondary structures which are also called as motif. तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो बस मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ चेक करनी है, मुझे है कि यहाँ डाउनलोड फाइल में अगर पीपीटीज मौजूद है ना तो वह हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हैंडआउट साथ साथ रीड करते जाते हैं, अगर पीपीटीज मौजूद है तो हम यहाँ पर देखते हैं।
जब तक वो हो जाता है तब तक के हम होम में जाते हैं और अपना पढ़ लेते हैं टॉपिक, ठीक है। हमने इसकी वीडियो भी सुन लिया तो इसकी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर देते हैं। इसमें इस सब्जेक्ट की पीडीएफ तो और हैंडआउट्स में इतना कोई खास फर्क नहीं है, सही है। तो खैर चले मैं बस कंफर्म कर लूँगी पीपीटी मौजूद है, अगर मौजूद हुई तो सही है, फिर हम हैंडआउट से पढ़ते जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। द ओवरऑल 3-dimensional arrangement of all atoms in a protein is referred to as the protein tertiary structure. We have a tertiary structure. It includes longer range aspects of amino acids. अच्छा ठीक है, amino acids that are far apart in the polypeptide chain may interact within the completely folded structure of a protein. Interacting segments of polypeptide chains are held in their characteristic tertiary positions by different kinds of weak interactions and sometimes by covalent bonds, ठीक है। उसके बाद between the segments, so large polypeptide chains usually fall into two or more globular clusters known as domains, which often give these proteins a bi or multilobal appearance, ठीक है। ओके डन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी पीपीटीज की तरफ। वैसे पीपीटी हो जाएगी, उसे रीड आउट कर लेंगे, जो नहीं हो पाएगी उसको रहने देंगे, ठीक है। और अदरवाइज हैंडआउट्स तो है ना, वो तो यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सही है। उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरा अपना भी यही कोर्स है, मैं अपनी स्टडी ही कर रही हूँ ये, ठीक है। और उसी को आपके साथ शेयर करी तो मैं पीपीटीज छोड़ने वाली तो नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, the overall 3-dimensional element of all atoms in a protein is referred to as the protein tertiary structure, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फोल्डर्स पे बना हुआ है, सही। It includes longer range aspects of amino acid sequence. Amino acids that are far apart in the polypeptide chain may interact within the completely folded structure of a protein. Interacting segments of polypeptide chains are held in their characteristic tertiary positions by different kinds of weak interactions and sometimes by covalent bonds between the segments. Large polypeptide chains usually fold into two or more globular clusters known as domains, which often give the proteins A, B or multilobal. Protein give these proteins a bi or multilobal appearance, ठीक। ये एक लोब हो गई, सेकंड लोब हो गई, थर्ड लोब हो गया, ठीक है, मल्टी लोब हो गया, सही। तो होंगे तो बाय लोब बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट असेसमेंट आ जाती है, सही है। तो पोस्ट असेसमेंट करो, इसके पीपीटीज में और हैंडआउट्स में कोई फ़र्क नहीं है, आप अपने को परेशान है बिल्कुल। कब से पढ़ रही हूँ मैं, अब तक भी कितने तकरीबन भी हम 67 टॉपिक पर हैं, तो इतना आइडिया मुझे हो गया है कि इससे दोनों चीज़ें सेम है। लाइफ ऑफ पोलिटेड कंटेंट्स यूजुअली फॉल्ड इनटू
सेकेंडरी से बनता टर्शरी। ये क्या, ये हमने पढ़े थे, ये सारे हैंडआउट्स हैं बिल्कुल, ये सारे सारे हैंडआउट्स हैं। तो एक ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है साथ साथ। तो इसको कर देते हैं क्रूज। अभी हमारे पास 68 लेसन नंबर 68 क्वाटरनरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इसलिए लेंगे। और ऐसे हम Some bigger proteins may not only consist of single polypeptide chain. They may contain two or more separate polypeptide chains, and these polypeptide chains are also called as subunits. These subunits may be similar or identical or different. The spatial arrangement of these subunits is known as protein's quaternary structure. So in a protein molecule there may be more than one polypeptide chain which are associated with each other, and apparently they make a single protein molecule. So the spatial arrangement of these subunits in that overall molecule is called the quaternary structure. A multi-subunit protein is also referred to as a multimer, because it contains many subunits. And if a multimer contains few subunits, that is called an oligomer. And a single subunit or a group of similar subunits is called a protomer. As you can see in this diagram, this is the diagram of hemoglobin molecule, which is a protein, and it contains, you can see, 4 subunits: 1, 2, 3, 4. So 4 subunits are present in this molecule. But look at this, the 2 subunits, this and this, they are identical, and the other 2 subunits, this one and this one, they are identical. So a hemoglobin molecule contains 4 subunits, in which 2 alpha subunits are similar and 2 beta subunits are similar. So in this way you can say hemoglobin is a tetramer. It contains 4 subunits. But some scientists say that if 2 or more subunits are identical, then those identical subunits are regarded as single protomer. So in this way you can say a hemoglobin is a dimer. So this is at its quaternary level of organization. Identical subunits of multimeric proteins are generally arranged in a symmetric pattern. They are not arranged roughly. Rather, they have very regular symmetric patterns, and mainly 2 symmetries are present in the proteins, and these are rotational symmetry or helical symmetry. There are several forms of rotational symmetry, and the simplest rotational symmetry is the cyclic symmetry. In the cyclic symmetry, there is a single axis of rotation. That means the oligomers or the protomers, they rotate around a single axis. Either this is single axis and rotation is like this, or this may be the rotational axis and the protomers are arranged around this axis. Here you can see clearly in this picture,
can see two rotomers, one is this and the other one is this, and they have a single rotational axis. Around this rotational axis they can rotate, so there is only single rotational axis. This is called cyclic symmetry. It may contain more than two rotomers, like 1, 2, 3, 4. 4 may be present, but again the rotational axis is only one. So this type of symmetry is called cyclic symmetry. A somewhat more complicated rotational symmetry is dihedral symmetry. This is another type of rotational symmetry, and in the dihedral symmetry a twofold rotational axis is present. That means there is one axis, rotational axis, and protomers are arranged like this, and in the same molecule there may be another rotational axis and molecules are arranged like this. So this is called, here two rotational axes are present which are normally at right angle to each other, and such symmetry is called dihedral symmetry. As you can see in this diagram, for example, in this you can see 1, 2, 3, 4 protomers are present, but they have more than one rotational axis. One rotational axis is this, the other one is this. So this is for these two protomers, and this rotational axis is maybe for these two protomers. So there are more than one rotational axis. Normally two rotational axes are present. Similarly, in this you can see the number of protomers is increasing. This symmetry is called D4, dihedral symmetry D4, in which again the 4 protomers, but again the rotational axis, one is this, the other one is this. So for these protomers there are at least 2 rotational axis present in the molecule. A more complex rotational symmetry include icosahedral symmetry. In this, an icosahedron is formed. Icosahedron is a regular 12-cornered polyhedron with 20 triangular
faces. For example, in this icosahedron, you can see 12 corners are present. These are corners of an icosahedron. There are 12 such corners in this icosahedron, and there are 20 such triangular faces. So like one is this. So such 20 faces are present. So all these are actually protomers, which are arranged in this fashion, and they make an icosahedron. Such type of symmetries are present in the bacteriophages, as you have seen in the head of a bacteriophage. The other major type of symmetry besides rotational symmetry is helical symmetry. So in the helical symmetry, these subunits, protein subunits or protomers, they are helically arranged. For example, in this figure you can see this is a single protomer, and these protomers are attached together and they form a single helix segment. This is one helix segment, and in this many such helix segments are arranged. So this helix is actually exhibiting the helical symmetry, and this protein is at its quaternary level of organization. The example of such symmetry is also present in the capsids of different viruses like tobacco mosaic virus. So फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग अभी कंप्लीट, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग है, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. सम प्रोटीन्स कंटेन two or more separate polypeptide chains or subunits which may be identical or different. The special arrangement of these subunits is known as a protein's coordinate structure. A multi-subunit protein is also referred to as a multimer. A multimer with just a few subunits is called as a oligomer, and a single subunit or a group of subunits is called a promoter. Identical subunits of multimeric proteins are generally arranged in a system in a symmetric patterns. Oligomers can have either rotational symmetry or helical symmetry. There are several forms of rotational symmetry. The simplest is cyclic symmetry involving rotation about a single axis, or a somewhat more complicated rotational symmetry is dihedral symmetry, in which a two-fold rotational axis is present, and more complex rotational symmetries include icosahedral symmetry. ठीक है, उसके बाद है an icosahedron is a regular 12-cornered polyhedron having 20 triangular faces. The other major type of symmetry found in oligomers is helical symmetry. ठीक है, उसके बाद ये primary structure sequence of a chain of amino acids. Secondary protein structure highlighted by bonding of the peptide backbone. Backbone causes the amino acid to fold into a repeating pattern. Tertiary protein structure. Three-dimensional folding pattern of a protein due to side chain interactions, pleated sheath or alpha helix. Quaternary protein structure, proteins consisting of more than one amino acid chain. सही हो गया जनाब, उसकी ब्यूटीज को डाउनलोड कर लेंगे और फिर पढ़ लेंगे. सही है, तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ गया है, इसको ओपन कर लेते हैं. हियर वी गो. और यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सम प्रोटीन्स कंटेन 2 or more separated polypeptide chains or
subunits, polypeptide chains और subunits which may be identical or different. और उसके अलावा the special arrangement of these subunits is known as proteins or ternary structure. ठीक है. उसके बाद multi subunit is subunit protein is also referred to as a multimer. A multimer is just a few subunits is called as oligomer. ठीक है. And a single subunit or a group of subunits is called a protomer. सही. उसके बाद ये हमारी इसका टर्नरी स्ट्रक्चर आ गया. बीटा चेन है, अल्फा चेन है और इसके अंदर हीम पार्ट है. ठीक है. उसके बाद है आइडेंटिकल सबयूनिट्स ऑफ मल्टीमेरिक प्रोटीन्स आर जनरली अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिक पैटर्न. ओलिगोमर्स कैन हैव आइदर रोटेशनल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री. सही होगा. उसके बाद देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. द सिंपलेस्ट इज साइक्लिक सिमेट्री इन्वॉल्विंग रोटेशन अबाउट अ सिंगल एक्सिस. और हाँ जी, ये है सिंगल एक्सिस की रोटेशन. उसके बाद somewhat more complicated rotational symmetry is dihedral symmetry in which a fold rotation in which a two-fold rotational axis is present. ठीक है. ये two-fold rotational axis है, ये और ये. सही. उसके बाद more complex rotational symmetries include icosahedral symmetry and icosahedron is a regular 12-cornered polyhedron having 20 triangle faces. सही है. उसके बाद ये हो गया 20 triangle faces और icosahedral. और the other major type of symmetry found in oligomers is helical symmetry. सही है. उसके बाद में helical symmetry है, subunit है, segment है और समझ गया helical. डन हो गया. ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया डन. उसके बाद हमारे पास पोस्ट असेसमेंट है, इसको भी ले लेते हैं. सही है. तो इसको कर लेते हैं हम लोग. विच टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. हाँ जी. तो कितनी इंटरेक्शन हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयनिक इंटरेक्शन. ढेर सारी. चलते हैं हम लोग आगे. Which structure of the protein is the arrangement of protein subunits in a multi-subunit complex? Multi-subunit complex. Okay. So ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. अगले टॉपिक पर चलेंगे. टॉपिक नंबर 69 स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. सही हो गया. अब हमारे पास स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर आ जाते हैं और इसका कुछ कर लेते हैं. विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पैटर्न स्ट्रक्चर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. सही है. इसको कर देते हैं आगे. हमारी वीडियो को सुन लेते हैं. Dear students, in this module I'm going to elaborate on the storage of biological sequence information. You know that the biological sequence information may be of three different types. The first one can be the DNA. At the DNA level, the sequence information primarily consists of A, T, C and G. While for the RNA, the information is changed a little bit and you have A, U, G and C. For the proteins, you can have 20 different amino acids which are listed here for you. So these amino acids can be represented by their one letter symbol. For instance, alanine has A to represent it, arginine has R. So a protein can be simply
narrated by combinations of these alphabets. Dear students, the DNAs, the RNAs and the proteins can be sequenced in the laboratory. When I say RNA specifically, please note that there are multiple types of RNAs. For instance, mRNA, tRNA, ribosomal RNA, and others. So I'm just summarizing all of the RNAs when I say RNA here. So once you obtain the DNA, RNA and protein sequences from the experiment in the wet labs, you can store them in simple alphabetic strings. Note that a DNA sequence may contain multiple genes, and therefore it can have a very big sequence in hundreds of thousands of nucleotide bases, or kilobases as we call them. In the case of RNA, the sequence can be of a much larger variety because you have a lot more variety in the RNAs. Although their sequence is small, but their variety may be large. In case of proteins, the protein sequences can be very long as well because multiple genes can come together and the exons can code a protein. So the protein sequence itself can run in hundreds of thousands of nucleotides. So you can represent the protein sequence, the DNA sequence and the RNA sequence as simple strings. How do we store this information? So the solution to this problem lies in the publicly available databases that are there already. For instance, in case of DNA and RNA, you have the Gene Bank by NIH, and in case of proteins, you have UniProt and SwissProt and the others by the EMBL UniProt consortium. Let's take a look at each one of them quickly. So here is the Gene Bank website. So you can just go to the URL provided here, that is ncbi.nlm.nih.gov/genebank, and you can specify the nucleotide sequence here, as well as you can select some options by this drop down list box to insert search by accession IDs amongst others. This is the UniProt web page. So this is also a publicly available database. UniProt stores the protein sequences, the post-translational modifications, and other related information, and you can simply search it by providing the accession number here for the protein or the sequence and other credentials. So in conclusion, the nucleotide sequences which include the DNA and RNAs, they are publicly available for several species, and the database is the Gene Bank, while for the proteins, several proteins have been sequenced, and these hundreds of thousands of protein sequences are available in UniProt. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी वीडियो जो हो गई है कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हम लोग अपनी रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये सबसे नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ DNA contains A, C, T and G nucleotides and sequence of RNA. And sequence of RNA contains A, C, U and G, while sequence of protein contains A, R and D, C, E, Q, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y and P. These are actually 20 different amino acids in nature which compose a protein. मतलब कि इससे हो सकता है arginine हो सकता है, arginine हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी R से तो मुझे अमीनो एसिड का नहीं आता। न्यूक्लियोटाइड
मुझसे भी नहीं आता, ठीक है। और इसमें मुझे सिर्फ ऐसे न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है, आज लाइसिन नहीं आता। अच्छा ठीक है, ये सारे वो हैं अमीनो एसिड्स, और ये मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है इंट्रोडक्शन। इसमें है व्हेन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर सीक्वेंस्ड इन lab their sequences contain larger number of nucleotides with a huge number of varieties, and when we talk about protein, its sequence contains large number of bases as they are complex in nature. So at this stage we required some extra methods or techniques which will help us to restore the data of DNA और RNA, ठीक है। उसके बाद है solutions databases, ठीक है। अच्छा सही, solution databases, this large number of sequence or bases cannot be stored in a single computer. That's why there are many public sequence databases for DNA and RNA such as GeneBank, ठीक है, such as GeneBank by NIH. For proteins, the public databases UniProt and by UniProt consortium, ठीक है, consortium. Both GeneBank and UniProt are online database, and the DNA, RNA and protein sequences are available here online for public and researchers. Conclusion: we stored the information of nucleotide and amino acids regarding sequences and other properties via online databases. These databases offer readily available sequences, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में PPTs है, PPTs को हम लेते डाउनलोड। सो ये PPTs हो गई हैं डाउनलोड, अब इनको कर लेंगे ओपन आप। और ये हो गई अपन, अब इसको पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड, डीएनए सीक्वेंस कंटेन A, C, T and G. mRNA sequence contain A, C, U and G. Protein sequence contain A, R, N, D, C, E, Q, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y and P. 20 amino acids, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है अमीनो एसिड, इसका स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। एलेनाइन 3 लेटर्स में ALA और 1 लेटर में A। आर्जिनिन 3 लेटर्स में ARG, 1 लेटर में R। और एस्पेराजीन 3 लेटर में ASN और 1 लेटर में N। और एस्पार्टिक एसिड ASP 3 लेटर में और D है ये 1 लेटर में। सिस्टीन CYS है 3 लेटर्स में और C है अकेला 1 लेटर में। ग्लूटामिक एसिड इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर से GLU और अकेले को E से कैपिटल E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ग्लूटामाइन GLN एंड Q एंड ग्लाइसाइन GLY एंड G और हिस्टीडीन HIS एंड H। आइसोल्यूसाइन ILE और I, ल्यूसाइन LEU और कैपिटल L और लाइसाइन LYS और कैपिटल K, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास मेथियोनिन MET और कैपिटल M, फिनाइल एलेनाइन और PHE और कैपिटल F, प्रोलाइन PRO और कैपिटल P, सीराइन SER और कैपिटल S और थ्रियोनाइन THR और कैपिटल T, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन TRP और W और टायरोसिन TYR और स्मॉल y, ठीक है। उसके बाद वेलाइन में इसको VAL और V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन DNA mRNA and protein can be sequenced in the laboratory. We can therefore obtain data in mRNA and protein sequence which are simple list of alphabets, ठीक है। उसके बाद स्टोरिंग सीक्वेंसेस, डेटा सीक्वेंसिंग में कंटेन hundreds of thousands of bases. RNA sequence can be a
अच्छा ठीक है, उसके बाद स्टोरिंग सीक्वेंसेस बट इन द लॉन्ग सीक्वेंसेस आर लार्ज इन नंबर और अ प्रॉब्लम देन अराइज ऑन हाउ टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन. Solution databases. The solution lies with public sequence databases, DNA और RNA gene bank by NIH और proteins UniProt by UniProt consortium. ठीक है, उसके बाद ये है NCBI, स्टोरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. ठीक है, सर ने बताया कि यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड लिख देंगे. सही है, जीन बैंक ओवरव्यू. सही, यहाँ पर इसमें हम सेव कर सकते हैं इस सीक्वेंस से, इस इंटरफेस का यूज़ करके, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग इसको सेव कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन को. सही है, www.uniprot.org. ठीक है, यहाँ पर जाकर के हम लोग इन सब चीज़ों को सेव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. और उसके बाद है कंक्लूजन. न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंसेस आर स्टोर्ड इन ऑनलाइन डेटाबेसेस. ऑनलाइन डेटाबेसेस जैसे कि मेरे ख्याल में मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे हम लोग अपनी ईमेल में पिक्चर सेव करते हैं, सही, वो पड़ी रहती हैं. इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इंटरफेसेस बनाए हैं, कुछ ब्राउज़र्स, कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं इस नाम से, यूनिप्रॉट के नाम से, यूनिरेफ के नाम से, यूनिप्रॉट, इस सब के नाम से. तो ये इस वेबसाइट पर जाकर हम लोग जो है ना, यहाँ पर जाकर रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है, जैसे हमारे मैसेजेस भी पड़े रहते हैं ईमेल पर, और ईमेल के अंदर फ़ोटोज़ का फोल्डर होता है, उसमें फ़ोटोज़ भी पड़ी रहती हैं, और इस तरह से मुझे जहाँ तक के समझ आ रहा है. ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस इस तरह से सेव हो सकती है. ठीक है, उसके बाद DNA एंड RNA इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन जीन बैंक. ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन यूनिप्रोट. ठीक है, ये दो अलग अलग तरह की फाइल है. सही हो गया, हम उनको कहते हैं सॉल्यूशन डेटाबेसेस. सही. डन हो गया. तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया है क्लियर. हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. टॉपिक नंबर 70, कंपेयरिंग सीक्वेंसेस. अब इसको कर लेते हैं एक. और व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. Hey students, in this module, we'll be talking about comparing sequences from the biological database. It's a very important module as it will lay the foundation for such an exercise wherein we compare the sequences from different sequence databases. You already know that there are a large number of sequence databases that are available online for you, and GeneBank and UniProt are two of them. What if I ask you that you take two sequences from one such database and compare? For instance, if I ask you to take two protein sequences and compare them, what information can this comparison lead us to? One obvious thing is that it can tell you how similar these two sequences are, or it can also tell you which specific differences exist between the two sequences. Moreover, it can tell you how the evolutionary process has evolved and how different speciation and differentiation events have occurred in the past. Moreover, it can also help you to conclude the relationship between these two sequences. Now let's extend this example to the DNA and RNA sequences as well. You can draw the same conclusions by looking at the sequences from the DNA
as well as the RNAs. Let's consider this sequence and see how such a comparison can be done. So in this case, this is a DNA sequence, as you can see from the E's. So you can simply make it a rule of thumb that if a nucleotide sequence is given to you and it contains T, then it cannot be an RNA sequence. So this is a DNA sequence, and I want you to compare it with another sequence. So let's consider another sequence A, T, E, G, and G. So one obvious difference is that this sequence is longer and this sequence is short, as it has only 5 nucleotides, while this has a lot more than 5. Secondly, you can easily see that the nucleotide sequence that I mentioned here is exactly the same as the first 5 nucleotides in the first sequence. So this is another information that you can draw. So if you want to do a similar comparison with the RNAs, then you have to take an RNA sequence, and you can guess that by looking at these uracils here. And if I ask you to compare it with U, A, G, E, and U, so obviously this sequence is shorter again, and this one is long. But you will see that this sequence matches this portion very nicely. Also, it is very similar to this sequence. But there are two differences. Here and here. So it matches as well, but to a lesser degree. The area of the sequence highlighted in red match perfectly, while this portion matched partially. So you can have these very insightful search results by comparing different sequences. Let's consider an example from the protein. So this sequence is a protein sequence. As you can see that it's composed of 20 different alphabets, probably, and does not limit to A, T, E, and G, or A, U, E, and G. This was the DNA sequence nucleotides. These are the RNA sequence nucleotides. So this is a protein sequence. So by looking at this protein sequence, if I ask you to compare this sequence, so you will say that probably this sequence is very close to this portion. However, we have 3 mismatches. So here LFT exists, here III exists. The rest of the sequence matches very nicely. M, Q, V, A, and L. But in this case, there are 3 amino acid mismatches. So these are the cases that can exist, and these can help you actually, as we will see later, to look at similarity between sequences, the specific differences, their evolution, as well as the relationship in between the sequences. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, sequence comparison is the process of comparing and detecting similarities between
selected will depend on the goals of the particular alignment process. Sequence alignment appears to be extremely useful in a number of bioinformatics applications. For example, the simplest way to compare two sequences of the same length is to calculate the number of matching symbols. The value that measures the degree of sequence similarity is called the alignment score of two sequences. Background: there are millions of sequences in GeneBank and UniProt online databases, and if we will compare them so we can acquire knowledge. Introduction: by comparing sequences of sequences of DNA, RNA and proteins, we can get similarity among sequences. There might be some specific difference due to some disease or mutation. There may be some evolutionary history relationship among species, as their nucleotides can be similar or differ from each other. While UniProt and BLAST-P, etc. are used in case of amino acid sequence comparison. So the conclusion is, by comparison of nucleotides and amino acid of DNA, RNA and protein sequence, we can find similarity, differences, evolutionary effects and relationship among species. ठीक है, और प्लीज को भी कर लेते हैं स्टडी. सो हम लोग पीपीटीज को कर लेते हैं स्टडी. और कंपेयरिंग सीक्वेंसेस, background large number of sequences are available in GeneBank and UniProt publicly, but if we try to compare them, what will we get from such a comparison? By introduction, by comparing sequences, we can get similarities, specific differences, relationship, evolutionary insight. And ये है हमारा sequence ACTGGTCAGTCATGTCA. सर ने बताया कि ये वाला जो T है ना, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये थाइमन इसके अंदर, तो ये DNA का सीक्वेंस है. ठीक है, उसके बाद सर ने इसमें हमें समझाया था कि ACTGG अगर छोटा सा अलग से कुछ है, ठीक है, अलग से दूसरा सीक्वेंस है, तो वो इस सीक्वेंस से छोटा होगा और वो एग्जैक्ट यहाँ से मिल रहा होगा. ठीक है, सर ने वीडियो में जो हमें समझाया अच्छे समझ आते हैं मुझे, आप लोग को भी आई होप आ गया. तो यहाँ से अगर इसका इतना से पार्ट लेते हैं हम, तो उससे वो वाला सीक्वेंस मिल रहा था जो सर ने लिखा था यहाँ पर ACTGG वाला. ठीक है, और वो छोटा भी था और ये लंबा भी है. ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हो सकते हैं इसके. सही सिमिलरिटी ये हो सकती है, इसके इक्वल था, बिल्कुल सेम टू सेम था. सही है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं. आगे है CAGUAGGUAGCUAGGUAGC. ये भी यहाँ पर जो है वो साइटोसाइन है. साइटोसाइन से हमें पता चलता है कि ये RNA का सीक्वेंस है. उसके अलावा सर ने यहाँ पर भी एक एग्जांपल ली थी, UACG की एग्जांपल. CG लगाया था यहाँ पर सर ने. ठीक है, तो वो यहाँ से मैच नहीं हो रहा. जो यहाँ पर एक सेट से हाफ मैच हो रहा होगा सीक्वेंस, उसे कहेंगे पार्शियल सीक्वेंस मैच हो रहा है. और उसके अलावा होगा भी, छोटा भी होगा. तो वो जो सर ने लिखा था वो छोटा भी था, तो ये बड़ा हुआ है. और इससे कुछ न्यूक्लियोटाइड से, कुछ सीक्वेंसेस से ये वो जो है वो पार्शियली मैच हो रहा था. ठीक है, और उसके अलावा इसके साथ में जो है किसी से सेम भी मैच हो रहा था, जैसे कि UAGCU तो शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर. ठीक है, हाँ, ये वाला सीक्वेंस सर ने लिया था, तो इससे वो बिल्कुल मैच हो रहा था. लेकिन यहाँ पर अगर मैच करेंगे इसको, तो दो चीज़ें मैच नहीं हो रही, तो दो नहीं मैच होंगी, तो उसको बोलेंगे पार्शियल मैच हो रहा है. ठीक है, हाफ मैच हो रहा है मतलब. ठीक हो गया. उसके बाद में इस सबको बोलते हैं कि हम प्रोटीन को आपस में सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं उनको. ठीक है, उसके बाद MCV LEFT LPH LKIH QLFT LPH LKIHDH. और ये सारा प्रोटीन सीक्वेंस है. इसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं. हर एक जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पर सर ने दिया था MQVK LII. ठीक है, II लिया था सर ने, लेकिन हाफ
इससे मैच कर रहा था और वो छोटा भी था और ये लंबा भी है, ठीक है। यही सारे जो है अब तक भी सबने कंपैरिजन जो है ना डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बताने को बोला है कि ये दो चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसका सिमिलरिटी बताएंगे और डिफरेंसेस बताएंगे, ठीक है। कौन सा हमारे से मैच कर रहा है, कौन सा सही मैच कर रहा है, टोटल मैच कर रहा है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, मतलब माइंड सेट नहीं पहुँचेंगे सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, इसलिए तो हमें अच्छा समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं कंक्लूजन। Several conclusions can be drawn on a set of sequences in terms of similarity, specific difference, relationship, evolutionary insight। ठीक हो गया, डन हो गया। अब हम ले लेते हैं इसकी पोस्ट असेसमेंट, इसको ले लेते हैं यहाँ से और इसको कर लेते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर आ जाते हैं हम तो फॉर प्रोटीन द पब्लिक डेटाबेसेस यूनिप्रोट by comparing sequences of DNA, RNA, protein, we can get all of so चलो जी, इस वीडियो में इतने टॉपिक करेंगे, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक से। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, वो इस पर कमेंट करें, अपनी राय दें इसके बारे में। और उसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि जो है ना मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर मेट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एक्टिविटीज़ फॉर ऑन वीडियो एलिमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।